बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 अबाउट द फीडबैक कंट्रोलर्स और लेट मी क्विकली गो थ्रू द लास्ट डिस्कशन। हमने स्टार्ट किया था पीआई और पीआईडी कंट्रोलर्स को। वी विल कम बैक टू दीज टॉपिक्स। इसकी जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द मैथमेटिकल foundation and then its implementation। और जब इसकी मैथमेटिकल फाउंडेशन को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो देयर आर सम इम्प्रूवमेंट्स एज वेल in different situations, right? So we will come back to improvements gradually। जैसे जैसे केसेस आएंगे तो हम मुख्तलिफ इम्प्रूवमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो PID बेसिकली जो PID है, ये रेफर करता है हमारे पास एक सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल टू अस, राइट? कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, देयर आर सेवरल इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रूवमेंट्स। तो हम देखेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिकल फाउंडेशन को समझने के लिए भी हम इसको एनालिटिकली भी सॉल्व करते हैं और साथ साथ हम इसकी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन भी करते हैं। सिमुलेशन के लिए देयर आर एटलीस्ट 2 सॉफ्टवेयर्स, मैटलैब और LabVIEW, and also we showed some industrial जो सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक कंट्रोल स्टेशन है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि अगर PLC के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि वी कैन इंक्लूड। सो ये बाय द एंड ऑफ द कोर्स हम इसको रिविजिट करेंगे इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ओके, सो द थिंग इज, हमने ये पहले डिस्कस किया था और आज हम इसकी डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करेंगे कि इसकी डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कॉन्सेप्ट अबाउट PI, उसकी मैथमेटिकल फाउंडेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन डिजिटल फॉर्म। आज हम उसको देखेंगे। दिस वाज द एग्जांपल। डायरेक्टली हमने एक PI कंट्रोलर को यूज़ किया था और हमने ये देखा था कि PI कंट्रोलर के एडवांटेजेस हैं, बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें जो इंटीग्रल टर्म है, जो इंटीग्रल कैलकुलेशन होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरर। तो किसी भी वजह से अगर एन इंटीग्रल मींस के यू आर इंटीग्रेटिंग एरर, तो असल में इंटीग्रल टर्म जो है वो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। रफली से अगर हम कहें तो इंटीग्रल इज़ बेसिकली समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ एरर। तो इफ़ फॉर एनी रीज़न एरर जो है वो अगर आपका ज़ीरो को अप्रोच नहीं करता, तो इंटीग्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। इंटीग्रेशन कंटिन्यू रहेगी और उसकी वजह से आपके पास जो कंट्रोलर आउटपुट है वो सैचुरेट हो जाती है। इसको आप कहते हैं इट्स लाइक दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड विंड अप। ठीक है, तो रीसेट विंड अप भी कहते हैं इसको, और दिस इज in the book it is clearly called reset window। और इसका जो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं it is mentioned here AWR, anti reset window। ठीक है, okay। So this was the summary of our last lecture। और एंटी रीसेट विंडो पर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका ना सिर्फ ये कि जो सिस्टम की आउटपुट है, दिस इज सिस्टम आउटपुट एंड दिस इज योर कंट्रोलर आउटपुट, इन दोनों में इम्प्रूवमेंट आती है। क्या इम्प्रूवमेंट आती है? देयर वर 2 थिंग्स दैट आर इम्प्रूव्ड। नंबर
नंबर वन वाज इसका जो ओवरशूट है वो रिड्यूस हो जाता है, पहले यहाँ पर था, अब नाउ इट इज ऑन रिड्यूस्ड। इन दोनों केसेस के अंदर ओवरशूट भी रिड्यूस होता है। दूसरा, इसका जो सेटलिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है। सो देयर वर टू थिंग्स इम्प्रूव्ड, एक ओवरशूट आपके पास जो है वो कम हो जाता है, और दूसरा जो सेटलिंग टाइम है वो भी आपके पास कम हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्या किसी ने इसको किया? इट वाज रिक्वेस्टेड कि इसको आप कीजिए इन मैटलैब। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, दिस इज द डेरिवेटिव पार्ट ऑफ इट, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, दिस इज योर p पार्ट, दिस इज द डेरिवेटिव। इसमें ये फिल्टर है, फिल्टर की ज़रूरत होती है क्योंकि वी विल सी लेटर ऑन जब डेरिवेटिव को देखेंगे। दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट PID का, और ये आपका प्रोपोर्शनल पार्ट है। मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन है, एंड द रीसेट पार्ट इज़, और यहाँ से जो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है, दिस इज़ द पार्ट दैट इम्प्लीमेंट्स एंटी रीसेट। ओके, सो ओवरऑल इनपुट पे हमारे पास एरर है, एंड दिस एरर इज बेसिकली व्हाट, ये एरर आपके पास लाजमी तौर पर, दिस एरर विल बी द सेट पॉइंट माइनस द वाई मेजरमेंट। ठीक है, ये एरर आता है, एंड हियर योर कंट्रोलर इज यू which is basically the output of PID controller। ठीक है, ये आप सबको सिमुलेशन, ये जो सिमुलिंग का, ये मैं जो पूरा ये जो ब्लॉक आपको शो कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली, लेट मी रीड्रॉ स्मॉलर पोर्शन ऑफ इट। ओवरऑल ये PID है, PID will provide us U signal, this will go to maybe a valve or motor, or this will go to the process, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यहाँ से में आउटपुट है, आउटपुट पे कहीं आपके पास कोई सेंसर लगा हुआ होगा, सेंसर के बाद आपके पास कहीं ट्रांसमीटर है, एंड देन दिस ट्रांसमीटर विल सेंड बैक द सिग्नल हियर माइनस प्लस। यहाँ आपके पास सेट पॉइंट है, एंड हियर इज द एरर। तो ये जो आपके पास, सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम हियर टू हियर, ये पॉइंट आपके पास जो है, इट इज दिस पोर्शन with a green one. So what I have drawn here is this portion। ठीक है, ये क्लियर है सबको ये वाली बात? कोई इसमें तो इशू नहीं है? ओके, एनी क्वेश्चन? फिर हम आगे चलें। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, द लास्ट एग्जाम्पल, एंड गेट दीज ग्राफ्स बाय योरसेल्फ इन सिमुलिंक। इससे आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव इम्प्लीमेंटेड। आपको शायद ये वाला पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जो नीचे डेरिवेटिव वाला पोर्शन है। यू कैन ओनली फोकस ऑन दिस रेस्ट ऑफ द PI कंट्रोलर। तो आप D को ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला पोर्शन ना बनाए। ठीक है, ओके, सो इज इट क्लियर? दिस वर्क इज क्लियर टू यू? किसी को कोई अगर समझ में नहीं आया तो मैं मैटलैब में अलग से आपको बताऊं किस तरह ड्रॉ करना है। डू यू नीड me to draw it for you, or you would like to work on it? G, anyone? Let me take the attendance as well. Okay, so you will do it yourself. Very good.
जी कोई सवाल है? ओके, सो वी विल कंटिन्यू नाउ. Haj ji, there is a question here. Okay, okay, so अब हम इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं. वी डिस्कस, अब हमने इसको मैथमेटिकली देखना है कि द प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल, और दिस इज बेसिकली इसमें तीन डायमेंशंस हैं. कमिंग बैक हियर इन द प्रीवियस स्लाइड, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर को हम जो चीज़ दे रहे हैं, इट इज़ बेसिकली द एरर. ओके, और इस एरर की बेसिस पे कंट्रोलर ने एक्शन लेना है. एंड वी आर आस्किंग controller dynamics to behave in three ways. One is the simple proportional mode. The other is integral mode. And the third one is the derivative mode. Okay, अब इन तीनों की combination कैसे चलती है? So there is one form of PID controller जिसको हम कहते हैं, it's called a parallel form of PID control. Let's see कि PID का parallel form क्या है. और so parallel form के अंदर what we have here is क्योंकि the plant industrial plants जितने भी होते हैं, they are actually working on some their operating condition. For example, अगर हम अभी घर में सप्लाई या पावर सिस्टम्स की बात करते हैं, तो अभी करंटली हमारे पास जो सिस्टम है वो 220 वोल्ट्स और 60 हर्ट्ज, 220 वोल्ट्स एंड 60 हर्ट्ज के ऊपर आपका सिस्टम रन कर रहा है. इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंसेस आपका कंट्रोलर पे उसके ऊपर एक्शन लेगा. ठीक है, सो दिस इज लाइक एन ऑपरेटिंग कंडीशन या इनिशियल. तो ऑपरेटिंग कंडीशन एक होगी, और उस ऑपरेटिंग कंडीशन के ऊपर नाउ इट इज गोइंग कॉन्स्टेंटली एट दिस वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट चल रही है. सो दिस इज मोर लाइक, ये पी बार जो है, दिस इज लाइक दी this corresponds to the operating condition या initial condition. ये वो condition है जो normal control action को show कर रही है. ठीक है, this can be the balance condition of the controller. ठीक है, इसमें कोई disturbance नहीं, कोई error नहीं है. या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि when this is the value of t, इसको मैं और elaborate कर देता हूँ कि this is the value of PT, this one controller output है. PET is basically the output of the PID controller. ठीक है, PT is the output of PID controller. ठीक है, this is the same as U of t right now. So this is the, अच्छा इसको P क्यों कहा है, अभी आगे जाके आपको क्लियर होगा कि उसको हमने P क्यों कहा है. क्योंकि U of t can take different forms. ठीक है, U of t जो है वो this can result into two possible things. Let me highlight here. अभी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि बाद में जब दोबारा बात आएगी मुश्किल ना हो. So जो U है, this may give us information about the position, for example of a valve. आपका जो कंट्रोलर है वो हो सकता है कि वो रिक्वायर्ड पोजीशन या नेक्स्ट पोजीशन जो होती है वाल्व की, वो कैलकुलेट कर रहा हो. ये भी पॉसिबल है कि आप PID इस तरह डिज़ाइन करें कि वो इसकी जो it can rate of change of position of the valve, वो ये भी कैलकुलेट कर सकता है. ठीक है, सो वी विल सी कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं. So right now calling this P, calling right now U as
PT हैज सम मीनिंग, अभी जाके क्लियर हो जाएगी. So this P bar पे वापस आता हूँ. This P bar is basically the value of PT when E of T is achieved is is zero. ठीक है, यह बहुत ही मिनिमम है या तकरीबन जीरो हो चुका है, तो ये उस वक्त की बात है. Now what happens, going to back to the previous slide, अचानक अगर फॉर एग्जांपल द सेट पॉइंट वाज 10 यूनिट्स और आउटपुट जो है वो भी 10 के ऊपर है, नो प्रॉब्लम. सम डिस्टर्बेंस में अकर हियर, उस डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक जो आपके पास जो आउटपुट मेंटेन थी वो डिस्टर्ब हो गई एंड इट वेंट बैक टू लेट्स से 8. तो जैसे ये 8 के ऊपर जाएगी तो दिस 8 विल कम हियर एंड 10 माइनस 8, एक एरर जनरेट हो जाएगा 2 यूनिट्स का. ये 2 यूनिट्स का जो एरर आपके पास जनरेट होगा ये फिर आपका कंट्रोलर में आएगा और कंट्रोलर में एक एरर जनरेट हो जाएगा. ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट्स हैपनिंग हियर इज आपके पास ये जो इसकी बाकी इस पीआईडी की जो बाकी टर्म्स हैं 1 2 and 3, दिस इज द प्रोपोर्शनल टर्म, दिस इज द इंटीग्रल टर्म, दिस इज द डेरिवेटिव टर्म. तो इन तीनों को अगर और से देखें तो इसमें डायनेमिक्स एरर की वजह से आ रही है. ठीक है, इफ एरर इज जीरो तो ये तीनों टर्म जीरो होंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास एरर आएगा उस एरर की वजह से इनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी और जो पी बार की वैल्यू है उसमें ऐड होनी शुरू हो जाएंगी ये तीनों कैलकुलेटेड, इन तीनों टर्म्स की. ठीक है, सो दिस इज वर्किंग इन पैरेलल. ये तीनों अलग अलग एक एडिटिव, पैरेलल को आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये आपका एक एडिटिव जो है सिग्नल फॉर्म है ये. ठीक है, ये तीनों ऐड कर रही हैं उसको. इस स्लाइड तक ये बात 813 इज क्लियर टू ऑल, इसमें कोई इशू तो नहीं है क्योंकि हम आगे जो है इसी इक्वेशन को लेके अभी हम चलेंगे आगे. नाउ दिस इज नॉट अ डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन, अभी हम इसकी डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन रेडी करेंगे. सो इज दिस क्लियर टू ऑल? बहुत सिंपल सी है. ठीक है, अगर मैं इसमें से अलग करना चाहूँ तो बेसिकली द पी इज के सी ई ऑफ टी. आई को कंप्लीट देखूं तो वो होगा के सी अपॉन टॉ आई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t e to the power t d of t. अच्छा, ये इंटीग्रल टर्म प्लस के सी टॉ डी डी ई ऑफ टी अपॉन डी टी. ठीक है, ये तीनों आपके पास जो हैं दिस इज द प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव. ओके, सो हैविंग दिस सिस्टम अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं. आई एम नाउ स्किपिंग ऑल दिस द सीरीज फॉर्म राइट नाउ और हम राइट. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अब हम इसकी बात करते हैं. ओके, सो digital implementation and forms of PID controllers. Okay, right. So in this हम रिकॉल करते हैं हमारे पास जो इक्वेशन थी 8. So we have PID controller equation or in parallel form. And the value is given to us as P of t equals to P of t equals to P bar plus Kc E t plus 1 upon tau I
इंटीग्रल फ्रॉम जी टू टी ई टू द पावर टी स्टार, इसको हम टॉ भी कर सकते हैं आसानी के लिए, and plus tau d and derivative of the error. Okay, ठीक है. So this is also given in, I think एक वर्जन में 8.13 है. This is from chapter 8, right? What should I do now for digital implementation? For digital implementation, what we should do is we need to approximate or um, replace the integral and derivative by their approximations, digital approximations. अच्छा, digital approximations क्या होती हैं? Basically which use, इसको मैं explain करता हूँ. That can work with digitally हमारे पास samples हैं with data samples. ठीक है, हम अगर एक साइन वेव है तो जब आप इसको डिजिटाइज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसके सैंपल्स आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली सैंपल्स होंगे, इंडिविजुअल सैंपल्स होंगे. सो इफ दिस इज ई ऑफ टी, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास ई ऑफ टी नहीं होगा बल्कि ई ऑफ 0 होगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगी ई ऑफ 1. इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होगी विच विल बी ई ऑफ 2, देन ई ऑफ 3 एंड सो ऑन. सो जो टाइम वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, इट विल टर्न इनटू लेट्स से k वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल. ठीक है, और यहाँ पे जो आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे ई ऑफ टी को, तो इसमें होगा क्या, इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन की जगह पे सो इंटीग्रेशन जो है इट इज़ लाइक यू, ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास है पूरी, दिस डी ऑफ टी, it will be approximated by what, summation, or let's say we use j from 1 to integrate. जैसे आप कर रहे हैं from this to this, तो इसको आप कहेंगे from a to b, तो इसको आप इंटीग्रेशन यू लिख रहे होंगे from a to b इंटीग्रल e of t d of t. यहाँ पे अगर आप a और b को देखेंगे तो a और b, ठीक है, यहाँ पर जो है सैम्पलिंग में इट विल बी द सम ऑफ द सैम्पल्स फ्रॉम लेट्स से j जो है वो a से लेके b तक होगा, एंड e विल बी द k, दिस विल बी द समेशन. ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व हियर विल बिकम द सम ऑफ द सैम्पल्स दैट आर कमिंग बिटवीन दीज. ठीक है, ये जितने भी सैम्पल्स होंगे उनको आप ऐड कर देंगे. Okay, so the integration will become e of j and delta t. ठीक है, so this is, किसी को इसमें कोई एतराज? It is clear to all of you. ठीक है, अच्छा, ये तो इंटीग्रेशन हो गया. जो डेरिवेटिव है उसको क्या करेंगे? सो द डेरिवेटिव de अपॉन dt, दिस विल बिकम, जी कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताइएगा. अब डेरिवेटिव को जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेशन में कोई मुझे हेल्प करेगा? जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव कैन बी डन बाय द फाइनाइट डिफरेंसेस. कि हम फाइनाइट डिफरेंस की बात करें तो दिस कैन बी रिटन एज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के ऑफ एरर e of k माइनस इट्स प्रीवियस वैल्यू e of k माइनस 1. जैसे अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव निकालूं तो
तो लेट्स से कि आई मे टेक दिस पॉइंट और आई मे टेक दिस पॉइंट, ये हो सकता है ई ऑफ 4 हो, ये आपके पास ई ऑफ 5 है, ठीक है। सो द डेरिवेटिव फ्रॉम हियर टू हियर विल बी ई ऑफ 5 माइनस ई ऑफ 4 डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास सैंपल टाइम है, के की कितनी वैल्यू है उसको हम डेल्टा टी कह देते हैं, ठीक है। डेल्टा टी इज बेसिकली के, यहाँ पर ख्याल रखें दिस डेल्टा टी इज नॉट बिलोंगिंग हियर, दिस डेल्टा टी इज बिलोंगिंग इन डिस्क्रीट केस जिसमें के माइनस के माइनस 1 है लेट्स से, ठीक है। ये सैंपल टाइम इसको आप कह लें, सैंपल टाइम, सैम्पलिंग टाइम इसको आप, सो इसकी अप्रॉक्सीमेशन डिवाइडेड बाय डी डेल्टा टी, ठीक है। ये दूसरी चीज भी आप लोगों को क्लियर है। सो दीज आर द टू थिंग्स। अब हम क्या करेंगे, वी विल गो एंड अब हम क्या करेंगे कि इसको रिप्लेस कर देते हैं हम इस इक्वेशन में। सो द PID इक्वेशन बिकम्स, PID इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब हम इसको इसका डिजिटल वर्जन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इन डिजिटल वर्जन, इन डिजिटल फॉर्म, जो PT था, PT विल बिकम P ऑफ K, कंट्रोलर एक्शन एट K इंस्टेंट, P बार विल रिमेन लाइक दिस क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस KC इज आल्सो कांस्टेंट फॉर बोथ इन डिजिटल में और उसमें, E of T will become E of K, K इंस्टेंट के ऊपर, प्लस ये जो पूरा आपका इंटीग्रल है 1/tau I और ये डेल्टा टी, दिस विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओवर 1/tau I और summation j from 1 to k E of j delta t, right? And finally we will have tau d and E of k minus E k minus 1. अभी हम parenthesis नहीं यूज कर रहे हैं, but I think we will use that for E of k delta t. Okay, right. So इस लास्ट इक्वेशन में दिस इज द डिजिटल फॉर्म ऑफ, और इसको हम P इसलिए कह रहे थे कि दिस इज बेसिकली करिस्पॉन्डिंग टू पोजीशन फॉर्म, इसको हम कहते हैं पोजीशन फॉर्म, पोजीशन फॉर्म ऑफ PID कंट्रोलर। जी, इस पोजीशन फॉर्म को, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, ये बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन में कोई क्वेश्चन? Okay, so now I will move to next slide. Acha, so we have, what we have is the position form. Let me take a snap from here. इसको दोबारा लिख लेते हैं. So what we have here is P of K equals to P bar plus KC, and इसको अगर हम, अच्छा इसमें एक चीज़ को नोट कर लीजिए कि दिस डेल्टा टी कैन कम आउटसाइड हियर, क्योंकि इस समेशन में जो है E of J को हम ऐड कर रहे हैं, तो डेल्टा टी विल बी मल्टीप्लाइड बाय इट, तो मैं इसको बाहर ही लिख लेता हूँ, प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय
tau I summation j equals to 1 to k and E of j plus tau d divided by delta t and E of k minus E k minus 1. So this is the position form. अच्छा, इस पोजीशन फॉर्म के साथ इसको हम पोजीशन फॉर्म क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज एग्जैक्टली गिविंग अस द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द वाल्व, अगर इन टर्म्स ऑफ वाल्व अगर हम बात करें. इसके अलावा एक और फॉर्म भी है. वी आल्सो हैव we can have another form for implementation, which is called velocity form. और वेलोसिटी फॉर्म को हम कैसे हासिल करते हैं? वेलोसिटी फॉर्म को हासिल करना बहुत आसान है. अच्छा, वेलोसिटी फॉर्म का मतलब ये कि इफ दिस इज अ पोजीशन फॉर्म, position of, you can say that valve or motor at k. तो velocity form के लिए let's write the position form at let's say k minus 1, at instant k minus 1. तो इसी इक्वेशन को अगर मैं k minus 1 इंस्टेंट के लिए लिखूंगा तो क्या होगा? सो इसका बहुत सादा सा तरीका ये है कि जस्ट रिप्लेस दैट इज जस्ट रिप्लेस k की जगह पे आप k minus 1 को लिख दें. तो इस इक्वेशन में जब आप k minus 1 करेंगे तो दिस p k minus 1 p bar is a constant plus kc. E of k क्या हो जाएगा? E of k minus 1 plus delta t minus tau I. And what about the summation? E of j will be from 1 to, अब j कहाँ तक जाएगा? पहले j जब आपके पास k तक जा रहा था, but now we are talking about k minus 1 instant, तो अब एक instant पीछे तक जाएगा ये बस, plus k minus 1 तक plus tau d divided by tau, okay, so delta t, और अब E of k, it will become E of k minus 1 minus E of k minus 1 will become what? Can anybody tell me what E of k minus 1 will become? Anyone? E of k minus 1 will become k minus 2. Okay. Okay. So just like की position से जब आप velocity calculate करना चाहेंगे, तो what will be the next step? Can anybody guess what will be the next step that I am going to do? The only thing that we need next is to get the velocity form. We need to subtract. We need to subtract the above equations. So जब हम इनको subtract करेंगे, on the left hand side, what we are going to get is p of k minus p of k minus 1. This will be equals to p bar. ये दोनों p bar आपस में cancel हो जाएंगे, and we will have kc here. और inside हमारे पास जो है this first one
will be E of k minus E of k minus 1, okay, plus delta t upon tau I. I'm now talking about the next one. Or what will happen to this? यहाँ पे क्या होगा? Summation j equals to 1 to k E of j minus summation j equals to 1 k minus 1 E of j, right? And then we will have plus tau d. Next we will have E of k minus E of k minus 1 minus E of k minus 1, and this will become, subtract here, so this will become plus E of k minus 2. Okay, now इसको गौर से देखें तो this will become what? यहाँ तक ये, by the way, this step everyone is comfortable up till this step, please confirm. फिर हम मैं दोबारा मीटिंग कॉल करता हूँ, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, I will come back in 5 minutes.